जी वेलकम बैक मिस्टर ओवैस एक्साइटिंग मैच डे 3 तो कल से शुरू हो गया which is now we are into that stage where the groups get decided. We will find out very soon by Sunday कि कौन आगे जा रहा है, कौन राउंड ऑफ 32 में खेलेगा या नहीं खेलेगा. अब जो कल मैचेस हुए हैं उसमें ग्रुप ए बी और सी के मैचेस कल सारे खत्म हो गए. बट उसमें जो Yeah, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं वो ये है, एज यू वुड हैव सीन एज वेल, साउथ अफ्रीका have gone through for sure, like they've qualified. मेरा अपना ख्याल है पहली दफा ऐसा हुआ है कि वो ग्रुप स्टेजेस से आगे बढ़े. आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक. लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका पहली दफा आगे बढ़ा है, कनाडा पहली दफा आगे बढ़ा है. तो it's been very interesting to see some of those games. But on the flip side, it's also for teams like South Korea and Scotland, जो माइनस गोल डिफरेंस पे 3 पॉइंट्स के साथ बैठी हुई हैं, उनको संडे तक वेट करना होगा टू सी वेयर दे लैंड अप ऑन द थर्ड पोजीशन वाला टेबल. तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है आई थिंक जैसे ये कंक्लूड होंगे ग्रुप स्टेजेस वी विल गेट टू सी हु गेट्स टू द नॉकआउट एंड ऑब्वियसली नाउ थर्ड प्लेस वाली चीज पे भी बहुत स्क्रूटनी है टू व्हिच टीम्स आर गोना गेट क्वालिफाइड. दिस इज द रूल चेंज दैट यू हाइलाइटेड बिफोर एंड वो रूल भी इंटरेस्टिंग हो गया है. आई एम श्योर on tie breaking scenario head to head versus what we used to see in the past. The goal difference पे काफी होता था. Goal difference will be there, but that will be a second measure. The first measure will be head to head या on team play, and it's gonna get exciting. Plus, I think even in the knockout or quarterfinals, I think yellow cards are also gonna get redressed. While I was reading, I'm not sure if this is an implied अच्छा, rule. नॉकआउट्स के लिए येलो कार्ड रिफ्रेश हो जाएगा. Yeah, I think I was reading that up. I'll have to double check on that, but that's also one of the new rules which is in play. So pretty exciting ओके, stuff. सो देखते हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग या फॉर श्योर. बट मूविंग ऑन, आई थिंक तो हाँ, जिस तरह मैंने कहा ग्रुप ए बी और सी तो कल डिसाइड हो गए थे. आज जो तीन ग्रुप्स होंगे वो डी ई और एफ होंगे. अब लेट्स वेरी क्विकली लुक एट दोस ग्रुप्स. जो ग्रुप बी है दैट इज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे एंड टर्की. I think this group is more or less, we know that the three teams, Turkey though is out of the race. Yeah, it's They're been not going through. eliminated. Uh, It's a question on Turkey is Paraguay and eliminated. Australia. Yeah, for the second place, it's a question हाँ, on इन दोनों के Paraguay ऊपर है कि कौन and कंफर्म्ड Australia. आगे जा रहा है और कौन थर्ड वाली रेस में जो है वो रहेगा. क्या कहते हैं आप? अब आई थिंक इनके जो मैचेस हैं, इट्स यूएसए वर्सेस टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पैराग्वे. सो इट्स अ स्ट्रेट शूट आउट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पैराग्वे. Yes, so I think it's gonna stay where it is right now. USA will stay on the top. Paraguay या has a chance, and unless it's a draw, so the scenario changes. But I think USA and Paraguay will be the first two teams from the group, and the third spot can be Australia, in my opinion. अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे है, तो तुम कह रहे हो कि पैराग्वे मोस्ट लाइकली ऊपर आ जाएगा. they'll beat Yes, ऑस्ट्रेलिया, यू फील? unless they ओके, draw it. हाँ, ड्रॉ करेंगे तो फिर तो कहानी वैसी की वैसी ही रहेगी. बट Yeah. हाँ नहीं, यूएसए तो विल, आई आल्सो थिंक यूएसए विल रिमेन टॉप. टर्की जिस तरह खेल रही है, यूएसए शुड बी एबल टू गेट द पॉइंट्स ऑफ देम. सो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग. एंड ऑस्ट्रेलिया पैराग्वे आई थिंक विल बी 50-50, सो इट कैन गो ईदर वे. ग्रुप ई में देखते हैं. ग्रुप ई में कहानी है कि अभी ऑल फोर टीम्स आर इन कंटेंशन. लाइक जर्मनी इज ट्रू, बट बाकी तीनों अभी भी कंटेंशन में हैं, सो नो वन इज आउट ऑफ द रेस इज येट. द मैचेस लेफ्ट आर जर्मनी एंड इक्वाडोर एंड आइवरी कोस्ट एंड कुराको. सो व्हाट विल बी मोस्ट लाइकली हैपन इज, मेरा ख्याल है कि जर्मनी अपना मैच जीतेगी और आइवरी कोस्ट भी अपना मैच जीतेगी मेरे अपने हिसाब से. और जो बाकी दो टीम्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी बिकॉज दे आर ऑलरेडी नॉट पार्ट ऑफ द थर्ड प्लेस पोजीशन राइट नाउ. वो ऑलरेडी उससे भी आउट है, एंड आई थिंक दैट विल रिमेन द केस. Yeah. So likewise, I think I have the same view. Germany has secured its spot, and it's going to be an easy win during the upcoming matches. Second spot will go to Ivory Coast, and the rest of the two teams will get eliminated eventually. नाउ ग्रुप एफ, दिस इज अ वेरी Interesting इंटरेस्टिंग group. ग्रुप Yeah. बिकॉज जिस तरह से पॉइंट्स हैं, अभी किसी की पोजीशन भी नहीं कंफर्म्ड है. अब Yeah. मसला ये है कि नेदरलैंड्स और ट्यूनीशिया का मैच है, विच आई थिंक नेदरलैंड्स विल विन इजीली. और जो दूसरा मैच है जापान और स्वीडन का. अब नेदरलैंड्स ने अगर बहुत ही कोई वन साइडेड जीता ट्यूनीशिया से, तो देन दे विल रिमेन कंफर्म फॉर फर्स्ट प्लेस. बट if Japan also win against Sweden, then it will be between Netherlands and Japan for first and second. Or Sweden will take a hit then on their goal difference, even though they'll be on 3 points, but they'll take a hit on their goal difference. So interesting hoga. I personally think it will be a Netherlands win. They'll remain top, and it will be Japan and Sweden for a draw.
I would differ a bit. Netherlands will stay on top. That's what I'm gonna agree with you. But I think Sweden Hmm. can somehow come back in their last match, and I think they should, considering I mean, Japan has discipline, Japan has all the players. I'm not doubting on the players and squad and all of that. But I think Sweden will make a comeback and they will finish second, and third spot is gonna go to Japan. Yeah, I think the Group G, this is the most surprising result for me so Again far. an One of the most surprising interesting groups. group. Yeah, yeah. It's an It's an interesting group. interesting They group can itself. उसमें so right now Egypt is top, Iran is second, and Belgium is third without even being in the race for third. So अभी currently as things stand, Belgium is going home after the group stage. अब जो मैचेस रह गए हैं वो रह गए बेल्जियम एंड न्यूजीलैंड रह गए और इजिप्ट और ईरान रह गए. So there is a likelihood, there is a chance that Belgium, if they win against New Zealand, they will go on to second. Because Egypt, Iran में कोई भी result आया, so that means one of those teams, two teams will come down, right? So if Egypt loses, they'll be on 4 points. Belgium wins, they'll go on 5 points. So Belgium के पास chance है. So unless they screw up their match against New Zealand, they are going home, which I don't think they will eventually. But I do sincerely hope, I really hope, because यार जितना मतलब जितनी पॉलिटिक्स इस चीज के ऊपर चली है ना, आई रियली रियली होप ईरान गोस थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड. तो इजिप्ट ईरान भी अगर ड्रॉ होता है तो फिर तो बेल्जियम जीत के टॉप पे ही आ जाएगा, क्योंकि गोल Yeah. डिफरेंस में शायद वो लोग आगे हो जाएं. बट But हाँ देखते हैं मतलब Iran is true. मतलब जो situation नजर आ रही है with the first two matches, Iran seems to they will be able to manage the सीम्स टू बी गोइंग थ्रू. हाँ, yeah, yeah. या Unless लेट्स सी, anything लेट्स changes सी. आई around रियली होप दे the डू. yeah, likewise. बट आई रियली होप दैट दे डू गो थ्रू. ठीक है जी, ग्रुप एच में आते हैं. इट्स स्पेन ऑन टॉप राइट नाउ, यूरुग्वाई सेकंड, केप वर्डे ऑन थर्ड, साउदिया इज आउट ऑफ द रेस. वो तो आई डोंट, या हो भी सकते हैं अगर वो जीत गए. सो इट बेसिकली केप वर्डे एंड सऊदी अरेबिया एंड स्पेन एंड यूरुग्वाई. आई थिंक स्पेन विल विन, यूरुग्वाई विल लूज. आई केप वर्डे एंड सऊदिया इज एक्चुअली नाउ डिफिकल्ट टू कॉल. इट्स डिफिकल्ट टू कॉल क्योंकि केप वर्डे ने It's a स्पेन के खिलाफ भी ड्रॉ निकाल लिया, यूरुग्वाई के खिलाफ भी ड्रॉ निकाल लिया. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉल के सऊदिया के खिलाफ क्या खेलेंगे वो. yeah, yeah. I again think there's a chance, 50-50 chance for Saudi, but I think Hmm. the group standings is gonna remain the same. I think Saudi is gonna get an entry. I think Saudi. I also think will get it. I think Cape Verde or Saudi का draw होगा, and Cape Verde will get 1 point, and Uruguay will lose to Spain. So I Yeah, see Spain top and Cape Verde on second. ठीक है जी. अब अगले ग्रुप पे आते हैं, which is one of the most straightforward groups. France is on 6 points. Norway is on 6 points. It's a battle between them for the first and second position. फिर सेनेगल yeah, और इराक जो है वो जीत भी गए. जो भी जीता है, I don't see them because उनका सेनेगाल का फिर भी चलो अभी -3 पे है, लेकिन कितना ही वो कर लेंगे. सो देयर बी एन आउटसाइड कंटेंडर फॉर मेकिंग द थर्ड थर्ड प्लेस वाला टेबल. इराक जीतने के बाद भी इतना माइनस में है, गोल्ड का अभी -6 पे है. सो इवन इफ दे विन अगेंस्ट सेनेगल, आई डोंट सी देम हिटिंग 5 गोल्स और 6 गोल्स. अगर जीतेंगे भी तो एक गोल yeah. से जीतेंगे. तो वो लोग तो डेफिनेटली मोर लेस आउट ही है. सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वन. हालैंड ने तो बोल दिया कि भाई उनके मैच से मुझे कोई परवाह ही नहीं है, वो तो शायद जाएं वर्ल्ड कप भी जीत लेंगे, वो शायद हमें भी हरा दें, मुझे कोई मसला नहीं है. अब Yeah. समझ नहीं आई ये हालैंड जो है वो माइंड गेम्स खेल रहा है या क्या कर रहा है एम्बापे के साथ. Seems to be mind games. I think with no matches that we will see Haaland score likewise. Mbappe in form, so it's a clash between Mbappe and Haaland. I think it's gonna be one of those matches, okay, बहुत tricky matches होती है, which can result into a draw too, or it's gonna be a last minute win. So it's gonna be a very Yeah, I think intense France match. will win. I think France will win. I think Norway is doing well. I think they've been doing well. They're attacking good, but I just don't see their defense holding up against France. I think France is very strong. The attack में they're very strong. Yeah, they're one of the yeah. I would actually go on and say they have the best attack in this tournament. Like they Yeah, have Mbappe, they have Dembele, they have Desiri on one side. This attack, yeah, their attack is one of the most stacked attacks I've seen in a very long time. So I just think that it will be too much, and they will. I think it will be France winning, and then France on top, then Norway, and the other two teams will get eliminated. Anyway, Group J है जी. Argentina is on top, Austria, Algeria on second, Jordan is fourth. They're most likely out of it. उन लोगों का कोई चांस लग नहीं रहा. और मैचेस जो हैं वो भी अर्जेंटीना और जॉर्डन के ही हैं, और ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया के हैं. सो इट विल बी बेसिकली मैच शूट आउट बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड अल्जीरिया टू क्लेम सेकंड प्लेस. अर्जेंटीना जॉर्डन के खिलाफ दे शुड बी विनिंग. आई डोंट सी देम लूजिंग.
The only concern right now that I think Argentina should have is that they've scored 5 goals and all five have been scored by Messi. So that is one thing that I would, as an Argentinian the management team, I would want other players to also pitch in and score. Um Other than that, I think they definitely staying the same. I think it's going to be a different flavor altogether, not one side or one player scoring in Argentina match. And I think with our point race I'm going to see perhaps Alvarez or somebody else chipping in the goal net as well. And when it comes to standings, यही scenario लग रहा है कि Argentina, Austria or Algeria, right? They will remain Yeah. as in this order. अब आ रहा है हमारा favorite. Colombia, Portugal, Congo. Now the thing is, Uzbekistan is more or less done because they have a -7 goal difference. So अगर जीत भी गए Congo से, so it will be too much for them to get into the standings. Congo, on the other hand, अगर जीत जाता है तो they're very firmly in the third place race. ठीक है, तो वो even if they don't go above Portugal or Colombia, they remain in third after winning. So they'll still, I think, then they'll definitely be part of the 8 teams that go through as well. Portugal and Colombia will be a very, very interesting match. I think Portugal के लिए it will be a true test because पहला मैच कॉन्गो के साथ जो ड्रॉ हुआ था वो होना नहीं चाहिए था ड्रॉ उज्बेकिस्तान के साथ 5-0 जो हुआ था तो दैट वाज एक्सपेक्टेड इट शुड हैव बीन अ डेमोलिशन इन वन साइडेड गिवन पोर्चुगल की जितनी क्वालिटी है so Hmm. Colombia will actually provide a good litmus test, I feel, for this Portugal side and for Ronaldo. Yeah. So I also think Portugal के लिए toughest battle है, and it's a wait. Uh, the game is gonna be like a spot And decider. then the last group also will be interesting because England and Ghana are on 4, Croatia is on 3, Panama is on 0 right now, but they're not completely out of it, I would say. क्योंकि मैचेस जो रह गए हैं वो कौन से रह गए हैं क्रोएशिया और घाना रह गए और इंग्लैंड और पैनामा रह गए if Yeah. somehow Panama managed to find the result. Quite possible Panama find win somehow claim those 3 points and then they have an outside chance because अभी उनका goal difference इतना है नहीं. So that could be a possibility. अगर वो होता है तो England will then slip down to नहीं अच्छा even if Panama win they will need Croatia to lose. अगर Yeah. Croatia lose करता है only then Panama winning will put them on third. Otherwise, it'll just disturb England's position. But बात ये है कि they'll still be playing for it because they'll have something to play for. So they'll be giving it their all. England will want to win in a statement way. They will want to win in a big way just to get that confidence back, shut their critics up, and go out of the group stages in a strong manner. Ghana and Croatia will be one of I just think it'll be a very cagey match. A typical Mourinho type match जो हम लोग used to है ना Mourinho park the bus Yeah. very Part of us. very iffy. Nobody is playing open. It'll be very miserly in that sense. मेरा ख्याल है Ghana Croatia will be that. So I think England is gonna claim the first spot. Second spot is gonna Hmm. be Croatia, and third is gonna be Ghana. This is like my prediction. Outcomes can be different, but this is what I'm thinking. The score lines will favor the outcomes in terms of ranking. I, I think Panama might disturb England and just create a bit of a problem there. I'm gonna make a bold prediction over here. I think Yeah, Panama might I think just get a point out of it. the form will matter. I think from the past couple of matches they've you know uh, not win in लेकिन them, उसमें देखो and अगर फॉर्म की बात करो तो वैसे देखा जाए इंग्लैंड हैव नॉट बीन एबल टू बीट अ टॉप साइड इन द लास्ट 10 और 12 मैचेस अंडर ये भी ट्यूशेल एक जितने भी अच्छा उसके मैचेस पॉइंट के है. रिकॉर्ड आ रहे थे Yeah, ना it's a सो similar दैट्स आई एम situation to सेइंग कि प्रेशर उनके Portugal ऊपर one. Yeah, बहुत होगा yeah, it's a similar so they'll situation be to under a Portugal lot one. of pressure yeah True, true. yeah so they'll be under a lot of pressure I just think Panama might just get a point out of it and they'll disturb the standings in that way and Ghana and Croatia will be a draw in which case Ghana goes top England will be second and Croatia will be third. Let's see. I think fingers crossed. Let's see. Like I said, anything is possible. Yeah, anything is possible, absolutely. So yeah, जी, situation match day 3 is all set to be very exciting. I am a fan of the new format. I think हाँ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी further workout हो सकती हैं to improve it even more. But right now, as it is, it has left us with a exciting next 3 4 days
to still see who is going through, who is not going through, and who is in the race for the top three. In the third position table. तो अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा. नेक्स्ट मेरे ख्याल से हमारी मुलाकात अब संडे के बाद होगी जब ये ग्रुप्स डिसाइड हो जाएंगे. देन वी कैन गेट टुगेदर एंड सॉर्ट ऑफ लाइक कॉल द स्टार्ट कॉलिंग द नॉकआउट्स. तब तक हमें पता चल Yeah, जाएगा राउंड ऑफ 32 में कौन किससे मिल रहा है. तो देन इट विल देन इट बी डाउन टू ब्रैकेट्स, सो वी कैन डू अ ब्रैकेट वर्किंग के कौन, हाउ आर वी सीइंग द नॉकआउट्स प्लेइंग आउट देन. and that is gonna be the most toughest one to call out because most matlab sabki favorite team watch के and then we're banking on elimination, so it's the hardest part to do it. एब्सोल्युटली. बट ऐसे ही तो नहीं पर पंडित बनते ना. अभी हम हैं नहीं, That's लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ फिर ये तो करना पड़ता है, इस तरह के रिस्क तो लेने पड़ते हैं ना फिर. that's सही है बिल्कुल. And the people who are watching this video, please share your predictions as well. We would love to see your predictions in the comments. Who do you think are coming out of the group stages? Match day 3 किस तरह जाने वाला है? आप भी अपनी predictions दीजिएगा. And then we'll, By the way, मेरी OS एक and I prediction, will be back. बस sorry before you sign off, I think मेरी एक prediction is, I mean अगर Messi score ना करे तो it can be achieved, which is top scorers. If you see Haaland, 4 goals, assist के अंदर Bruno था. I don't Yeah. know what did you say, but I think that's a close watch too. We can perhaps check on next week or ये जो coming video. वो तो हम ट्रैक करते रहेंगे ना. मैंने तो टॉप स्कोरर में एम्बापे और हालैंड को डाला था. हालैंड Yeah, नहीं, सॉरी, एम्बापे और कीन को डाला था. तुमने हालैंड को डाला था टॉप स्कोरर. so I और think it's गोल्स a tie असिस्ट में मैंने, between हाँ, Haaland and उसमें गोल Mbappe. Yeah, असिस्ट में मैंने स्पेन वाले को डाला था, यमाल को. Jamal. Assist के अंदर तो अभी या था वो स्वीडन का Isaac है. चलें जी. तो देन वी सी ईच अदर अगेन ऑन मंडे, एंड द पीपल वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर योर predictions as well. And till then, enjoy football.